Hello students, so this is your lecture 18 instruction set. So in last lecture we have discussed the different branching instruction like jump instruction, conditional jump, unconditional jump, and then loop instruction, conditional loop and unconditional loop. So now in this lecture we will discuss the call and return function and then control instructions. So let's do it. So next topic is what call and return instruction. So format of this instruction is like this: call and then address is given, and then there will be what number of instruction will be there, and in last there will be what RET. So return RET is for what return. So basically call and return instruction are basically associated with subroutine and procedures. Subroutines and procedures. So what do you mean by subroutine and procedures? So subroutine is what? Subroutine is the set of instructions to perform some operations, and these operations are repeatedly occurs. So this is all about the basics of the call and return. So now I will explain you the how the call and return instruction are being executed. So now this time we will discuss the how the call and return instruction is going to be executed. So suppose microprocessor is executing the main program. So suppose this is what code segment. So this is code segment, and base value of code segment is held by code segmentation register. So this is what 2000H. Okay. So somewhere at this position, suppose at this position, so there will be a instruction of call, and address is given by 500H, and the offset at which this call 5000H is stored, and that is being held by this IP. So that will be what 1000H. So actually what is happening? So as this instruction is going to be executed, then program control will be transferred to the new memory location in the same segment, and at this offset 500H, then if suppose effective address is what 2000H, and now this time IP will be what 500H. So IP will be get updated by this 500H. So 20-bit physical address, new memory location will be 25000H. So this is what subroutine, and subroutine is having some set of instructions. So suppose यहाँ पे कुछ instruction होंगे. Suppose this is what instruction 1, instruction 2, instruction 3, and in the end of the program there will be RET. So RET is for what? Return. So actually what is happening? So microprocessor is executing the main program, and as this call 500H will going to be executed, then the control of the program will be transferred to the new memory location, or at this offset. So the new memory location will be what 25000H. So there will be number of instruction will be there. So after executing of these instructions,
in the end of the program there will be RET. RET is for what? RET is for what? Return. So जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, एंड में आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. सो अगेन फिर प्रोग्राम क्या होगा, मेन प्रोग्राम पे फिर से माइक्रो प्रोसेसर रिटर्न करेगा और अगेन आईपी will get updated by 100h. So this is the process. Okay, this is the process when call and return instruction is being executed. So my question is that, so whenever call instruction is going to be executed, so that time IP is what? 100h. But after this instruction, so the IP will get modified by 500h. And after executing these instructions and after execution of the RET, IP will again modified with the same content 100h. It means we have to store this IP somewhere. So for this we will use the stack. So whenever this instruction call is going to be executed, so that time the current offset IP will be posed into the stack. And after executing this subroutine or after executing of these instructions, so RET, so whenever RET is going to be executed, so that time, so the stored value of IP will be again loaded into IP. So this is the process, basic process whenever call and return instruction is going to be executed. So how the content of the IP is going to be loaded into stack. So suppose what is happening, we have considered that, so we have considered that code segment is given by, code segment register is given by 200h, and somewhere at this offset, suppose this is what IP, so this IP will what? 1000h. So now this time what? Call 5000h. So new memory location will be given by 25000h, and there will be what? RET return, and after execution of the return, the again program will be moved to the original position, or we can say content of IP will be again loaded by this 100h. Okay, so whenever this instruction is going to be executed, so that time the content of IP is what? 100h. So this is what? Stack, and so this is what? Top element, and the address of this top element is contained by what? Stack pointer. So this IP, so IPH will be loaded into this stack pointer 1, stack pointer -1. So at this location, suppose stack point at this position, stack pointer is having 2588h. So at this location 2587, so IPH will be loaded. So this time IP is what? 1000h. Okay, so this is what? IPH, and this will be what? IP of N. So IPH will be loaded into the content of SP-1, the content of SP-1. So it means 2587 पे आपका जो लोड होगा वो आपका 10 लोड होगा. अगेन स्टैक पॉइंटर फिर से माइनस होगा, तो स्टैक पॉइंटर की आपकी वैल्यू होगी 2586.
सो अगेन IP ऑफ L अगेन फिर से माइनस होगा, सो इट मीन्स यहाँ पे आपकी IPL की जो वैल्यू है वो लोड होगी। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे जो लोड होगा वो होगा 0 0। अब उस टाइम टॉप कंटेंट ऑफ SP, सो SP की जो वैल्यू होगी बेसिकली, सो कंटेंट ऑफ SP विल बी व्हाट, SP -2। सो SP की इनिशियली वैल्यू क्या थी 2588, और आफ्टर इंसर्टिंग दिस द IP, so IP will be what 2586। ओके, सो ये तो बेसिक प्रोसेस फॉलो होगा जब आप कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट होगा। अब सपोज रिटर्न इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा बेसिकली, and when return instruction will get executed, so that time what will happen, so content of SP, so will be loaded into what, IP of L, and again this SP plus 1, content of SP plus 1, and content of SP plus 1 will be loaded by what, IP of H, इसमें लोड हो जाएगा। एंड स्टैक पॉइंटर मॉडिफाई हो जाएगा किससे, स्टैक पॉइंटर, कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर प्लस 2 से। सो इट मीन जैसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो अब इस टाइम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है बताओ, सो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इस टाइम क्या होगी 2586। सो बिकॉज इस टाइम टॉप एलिमेंट आपका क्या है ये, सो सो दिस इज द न्यू मॉडिफाइड IP आफ्टर RET के बाद IP की जो वैल्यू होगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट IPL एंड दिस इज व्हाट IP ऑफ H। सो टॉप एलिमेंट, सो स्टैक पॉइंटर का जो भी कंटेंट है, कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर वो IPL में लोड होगा। सो इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो IPL में लोड हो जाएगी, 0 0 बोलेंगे इसको। अगेन स्टैक पॉइंटर 1 से प्लस होगा, इट मीन्स 8687 होगा, और वो इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू लोड हो जाएगी किसमें, IPH में। सो IPH में वैल्यू लोड होगी 10। ओके, और अगेन स्टैक पॉइंटर अब इसको फिर से पॉइंट आउट करेगा क्योंकि टॉप एलिमेंट आपका यहाँ पे है। सो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 2588। सो इस तरह से IP ओरिजिनल वैल्यू IP की लोड हो जाएगी बेसिकली। ओके, so next instruction is string instructions group. So now we will study the string instruction group. So what is string? String is basically array of data. So string is basically just a sequentially stored bytes or word. So this is like a array of data. So by using string instruction, the size of program is reduced. So this is the beauty of 8086 microprocessor, that we can directly perform the operations on the strings. सपोज स्ट्रिंग में आपको डेटा को मूव करना है, आपको डेटा को कहीं से लोड करना है, स्टोर करना है, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। सो देयर आर 5 बेसिक स्ट्रिंग instructions. So first one is what, to move the data byte we have moves SB, move आपने स्टडी किया बेसिकली डेटा को मूव करने के लिए। S यहाँ पे बेसिकली इंडिकेट कर रहा है स्ट्रिंग के लिए, सो इसको बोला moves। B मतलब बाइट, मतलब 8 बिट का डेटा अगर मूव हो रहा है तो आपको moves SB यूज करना है। एंड अगर सपोज 16 बिट का डेटा अगर आप मूव कर रहे हो, वर्ड आप मूव कर रहे हो, तो आप लिखोगे moves W। सो W स्टैंड्स फॉर व्हाट, वर्ड। सो मूव मतलब डेटा आपको मूव करना है, S फॉर स्ट्रिंग्स, B फॉर बाइट,
अगर बाइट स्ट्रिंग आपको मूव करनी है तो moves b and moves w for what, the word डेटा आपको मूव करना है. Similarly to for the comparison, so this is what CMP आपने पहले पढ़ा है CMP भी, but string को अगर कंपेयर करना है तो CMPS, और बाइट को कंपेयर करना है तो 8 बिट का डेटा कंपेयर होगा तो CMPSB, एंड 16 बिट का डेटा अगर कंपेयर करना है तो CMPSW. Okay, so next is what to scan. So we have SCAA, SCASB, and this is for what, byte, and for word we have SCASW. And similarly load the data, so load byte, suppose if we have to uh, load the byte string, so we will use LODSB, loads B, and to load the word string we will use loads W. Similarly for the store, STUSB and STUSW. Okay, this is for what, byte, and this W is indicating that word. Okay. So suppose we have to perform the different string operations. So let us consider we have to perform moves B. मतलब आपको वर्ड बाइट जो स्ट्रिंग है उसको आपको मूव करना है. So similarly suppose we have to consider some basic things. So let us suppose this is the place 1 or location 1, and this is what place 2. We have to move the data from place 1 to place 2, place 1 to place 2. So this is what, this is the source, and this place 2 is what, destination. So in 8086 microprocessor, so location of this source is being indicated by this source index register. So it means we required SI, and to locate the location of this destination we required another register, that is what, destination index. Okay, SI and DI. So okay, so we need SI and DI, and similarly suppose the movement of data, how the data is being moved. So movement of the data, or we can say the direction of the data, direction of movement of data is being controlled by what, direction flag, DF. If suppose DF is 0, if DF is 0, then the data movement that will take place from the lower memory address to higher memory address. And similarly suppose this is this type of movement will take place when DF is what, 0. And similarly suppose when DF is equal to 1, then data transfer will take place from what, higher memory address to lower memory address. Okay, so this is all about the DF, and we have already studied about this. Okay, one more thing, how to clear the direction flag and how to set the direction flag. So we are going to discuss just some basics, how the string operation will going to be performed. So we have just taken one example. Suppose we are going to perform the moves B. Means suppose byte data आपके पास में है, वो आपको one place से दूसरे place पे आपको move करना है basically. So we have considered this place 1, that is what, source, and this is what, another memory location, this is what, destination. So the location of the source is being indicated by this SI, source index register, and the location of the destination is going to be located by this DI, destination index register.
then direction of movement of data is being controlled by DF. If DF is 0, then data transfer will move from lower memory address to higher memory address, and if direction flag is set, then the movement of data will take place from higher memory address to what, lower memory address. Or okay, then after the movement of data, direction flag will get incremented or decremented. So it depends on the movement direction of the movement of data. If the DF flag is what, 0, then DF will get incremented, and if DF is what is 1, then the direction then it will be what, in a decremented mode. Okay, so now next question is what? So my next question is how to set or reset the direction flag. So to set and reset the direction flag, we have another command. So suppose to set the direction flag, we have std. So डायरेक्शन फ्लैग को सेट करने के लिए आपके पास में कमांड यूज करेंगे std set डायरेक्शन फ्लैग. सिमिलरली डायरेक्शन फ्लैग को रीसेट करने के लिए आपके पास में कमांड है, दैट इज व्हाट, cld clear the direction flag. So this is the there are two type of instruction. By using these two instruction std and cld, we can set or reset the df. Okay, so if the cld instruction is selected, then auto incremented mode will be selected. Okay, and when the std is selected, then auto decremented mode will be selected. Okay, so direction flag or df flag basically selects the auto incremented or auto decremented operation for the di and si registers during the string operation. Okay, so if the df is 0, then df is 0, okay, then transfer will be what, lower memory address to higher memory address. Okay, then si and di की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बाई 1 से. सो देन अगर आपने df 1 सेलेक्ट कर रखा है, तो si और di की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीमेंट होती जाएगी. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस how we can perform the string related operations. So actually what we have covered till now, so to perform the different string related operations, we required basically si register and di register to point out the source and destination locations. Okay, and we have also required df flag. Okay, so df flag is what, 1, then it means okay, and df flag may be 0. If df flag is 0, then it means the direction of the movement of data will be from lower memory address to higher memory address. Okay, though, so this address is being pointed out by what, source index register and destination index register. If df is 0, then the si and di will get auto incremented. Okay, इट मीन्स SI और DI की जो वैल्यू होगी वो बाई +1 से आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. एंड सिमिलरली सपोज इफ DF फ्लैग इज 1, देन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डेटा विल बी फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस, एंड the SI and DI will get auto decremented. वन मोर थिंग, सपोज द काउंट जो नंबर होगा, सपोज वो लोड होगा आपका CX रजिस्टर में, कि कितने डाटा कितनी बाइट्स आपको, कितने डेटा आपको ट्रांसफर करना है. सो जो काउंट होगा वो बेसिकली CS रजिस्टर में आपको मूव करना है बेसिकली. ओके, सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑपरेशन, memory will access the SI and
DI registers. So DI offset register, for the DI register, so the DI offset address access the data into extra segment for the all string instructions. Okay, and for the SI, so default segment register will be what? DS. It means आपके पास में DI रजिस्टर की कुछ वैल्यू है और उस 20 बिट फिजिकल एड्रेस अगर आपको कैलकुलेट करना हो, सो ऑफसेट आपका DI में स्टोर है और 20 बिट फिजिकल रजिस्टर फिजिकल एड्रेस अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट करेंगे ES इंटू 10H प्लस DI, कुछ इस तरह से। एंड सिमिलरली सपोज आपके पास में SI आपको डिफाइन हो और 20 बिट का फिजिकल एड्रेस अगर आपको कैलकुलेट करना हो, सो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? DS कंटेंट ऑफ DS इंटू 10H प्लस SI। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट DI के लिए जो सेगमेंट रजिस्टर डिफाइन है वो ES और SI के लिए जो बाय डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर डिफाइन है वो है DS। ओके, so now let us discuss the string related instructions. So first instruction is what? Moves. To move the string, B stands for byte. So to move the string byte we will use moves B, and ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? बेसिकली 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, आपका सोर्स का जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा दैट विल बी व्हाट? DS इंटू 16, और आप इसको बोल सकते हैं DS इंटू 10H प्लस SI, एंड जो डेस्टिनेशन का जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा वो आपका परफॉर्म होगा, वो आप फाइंड आउट करेंगे ES इंटू 10H और 16 डेसिमल में प्लस DI, एंड डेटा आपको मूव करना है सोर्स टू व्हाट? डेस्टिनेशन। सो सोर्स टू डेटा आपका मूव हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डेटा इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस DF. So if DF is 0, then DI, both SI and DI will get auto incremented by 1, and if DF is what? 1, so it means both the DI and SI will get decremented. Okay, so now this time what we are doing, we are just moving the byte, string byte. Okay, 8 बिट का डेटा आप मूव कर रहे हैं तो SI और DI बेसिकली यूज होगा। अब सपोज आपको वर्ड 16 बिट का डेटा अगर आपको मूव करना हो, सो प्रोसेस आपकी सेम होगी बेसिकली कि लोअर मेमोरी एड्रेस में आपका सपोज MA, आपका MA जो आपका ट्रांसफर होगा वो ME में मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, और MA+1 मींस सपोज अब आपको 16 बिट डेटा आपको ट्रांसफर करना है, सो SI और DI में ऑटो इंक्रीमेंटेड और जो डिक्रीमेंट होगा वो होगा +2 और -2 से। ओके, बिकॉज नाउ दिस टाइम वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू मूव द 16 बिट डेटा। ओके, so this is the basic process. Okay, if suppose we are moving the string byte, then both DI and SI will get updated by +1 or -1. If we are just moving the word byte word string, then SI and DI will get updated by +2 or -2. Okay, so this is the basic first operation of the string move. And second instruction is what? Compare. To compare, so process is same. Okay, so if we suppose we are using CMPSB, then CMPSB or CMPSW, so B for what? Byte. डेटा को आपको कंपेयर करना है तो CMPSB, और CMPSW वर्ड स्ट्रिंग को अगर आपको कंपेयर करना है तो हम यूज करेंगे CMPSW। ओके, सो 20 बिट फिजिकल एड्रेस होगा सोर्स के लिए DS इंटू 10H प्लस SI, एंड डेस्टिनेशन के लिए ES इंटू 10H प्लस DI। ओके, सो व्हाट ऑपरेशन will be performed? So MA minus MA of E, इट मीन्स कि सोर्स में जो डेटा है बेसिकली, ओके, सो कि सोर्स के जो कंटेंट है वो माइनस होंगे किसमें से? डेस्टिनेशन में से। ओके, और केवल फ्लैग मॉडिफाई होंगे बेसिकली। इफ द कंटेंट ऑफ MA is greater than MA of E, so carry flag 0, 0 flag 0, और साइन फ्लैग will be what? 0। ओके, बेसिकली आप परफॉर्म क्या कर रहे हो? आप परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली MA
MA ये आपका है एड्रेस और MA माइनस MA और E बेसिकली। सो MA बेसिकली डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है सोर्स को, और ये बेसिकली डिनोट कर रहा है क्या, डेस्टिनेशन को। ओके, सो if the content of MA is greater than ME, then carry flag, zero flag, and sign flag will be what, 0. And if the content of destination is greater than source flag, then carry flag and sign flag will be set. And if both are equal, then zero flag will be what, set. Okay. And similarly, suppose word operation, for the word operation, both the content of source index and destination index will get updated by +2 or -2. So it basically depends on the direction of the movement of the data. So on the based of the value of df, so it will get incremented or decremented by 2. So this is the next second operation. Third is what, scan. So SCASB for what, byte string operation, SCASW for what, word string operation. So let us discuss first the byte string operation to scan. So what operation will be performed? So AL minus ME of E, it means E for what, फॉर द डेस्टिनेशन. सो अभी आपने जो यहाँ पे यूज कर रखा है बेसिकली केवल एम में जो यूज लिया है वो बेसिकली हमने मेमोरी एड्रेस ये बेसिकली सोर्स के लिए यूज लिया है, और एम ए ऑफ ई यहाँ पे यूज लिया है मैंने डेस्टिनेशन के लिए. ओके, सो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा बेसिकली, AL माइनस MA ऑफ E, एंड MA ऑफ E इट मींस 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आपको कैलकुलेट करना होगा, तो ES into 10H plus DI. ओके, सो AL माइनस ME, AL कंटेंट ऑफ AL माइनस MAE कंटेंट ऑफ MA ऑफ E, इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट है उससे माइनस होगा. And if the content of AL is greater than MA of E, then carry flag, zero flag, and sign flag will be what, reset. And if the content of this memory location MA of E is greater than AL, then both carry flag and sign flag will get set. And if both content are equal, then zero flag will be what, set. And if we are going to perform the byte string operation, then the content of DI will get updated by +1 or -1. So it basically depends on direction flag. Okay, so we have earlier discussed about the direction, how the direction of the movement of data is being controlled by DF. So if DF is 0, then the direction of the movement of the data will be from the lower memory address to higher memory address. And if DF flag is 1, then the direction of the movement of the data will be from higher memory address to the lower memory address. Okay, so similarly, suppose for the word string, so operation will be same. So now this time we have to perform AX minus MA of E. Okay, so this is all about the scan operation, scan string operation. Next operation is what, load, to load the string byte and to load the string word. So what operation we have to perform? So we have to perform the data into the AL register. So AL register, now this time AL register is what, the destination, and the source, for the source the memory location will be what, DS into 10H plus SI. Okay, so suppose if we have to perform the byte string data, so the content of SI will get modified by +1 or -1 on the based on the value of DF. And similarly, suppose we want to perform the word string, then word string operation or word operation,
then the content of SI will get updated on the base of DF. Okay. Similarly, we have store operation. So now what we have to perform? We have to store the data from the AL to the particular memory location. So now this time AL is what? Source, and this particular memory location is what? Destination. So to calculate the 20-bit physical address, so we will use the extra segment and DI register, because this time we are using what? Destination. We are going to store the data from the AL to the particular memory location. So memory location is this time what? Destination. So for the destination we will use the DI register, and for the DI register the default segment is what? ES. So the 20-bit physical address will be what? ES into 10H plus DI. Similarly, suppose if we are going to perform the byte string operation, then the content of DI will get updated by +1 or -1 on the base of DA. And similarly, suppose we are going to if suppose we are going to perform the word string operation, then the content of DI will get updated by +2 or -2 on the base of DF. So this is all about the string operations. So let us discuss one example. So move SI, 1200 means SI का जो content होगा basically आपने define कर दिया 1200. So it means suppose ये आपका SI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर आपने डिफाइन किया बेसिकली. ओके, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट DS और ES को डिफाइन नहीं किया है, वो आप कर सकते हो बेसिकली. सो SI को आपने डिफाइन किया है 1200H. सो दिस इज व्हाट ऑफसेट. सो दिस इज 1200 एंड सिमिलरली DI. So DI को आपने डिफाइन किया है बेसिकली. DI is what? 2300. So this is what? Source, and this is what? Destination. So CLD it means direction flag को आपने कर दिया है set. So it means direction flag 0. It means तो जो अगर आप string related operation आप perform कर रहे हो तो सो डेटा जो ट्रांसफर होगा वो लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस ट्रांसफर होगा, और SI और DI की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? ऑटो इंक्रीमेंटेड मोड होगा. ओके, इंक्रीमेंट मोड. सो ऑटो इंक्रीमेंट मोड बेसिकली. ओके, एंड मूव CX, 04 मीन्स ये आपका काउंट है, कितने डेटा बाइट और कितना डेटा वर्ड अगर आपको ट्रांसफर करना है वो काउंट है. सो CX को आपने डिफाइन कर दिया 04 से. ओके, सो CX की वैल्यू जैसे ही आप अगर आपका फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे डेटा आपका मूव होगा, तो ये काउंट की बेसिकली क्या होता जाएगा? डिक्रीमेंट होता जाएगा. इसके लिए हम बेसिकली एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और यूज में लेने वाले हैं. सो नेक्स्ट ये आपका लेबल हुआ मूव्स B एंड लूप नेक्स्ट. लूप ऑपरेशन आपने यूज किया है, लूप नेक्स्ट. इट मींस ये वाला ऑपरेशन कब तक आपका परफॉर्म होगा? लूप. क्या ये आपने यूज में लिया है लूप कौन सा? अनकंडीशनल लूप. सो कौन सा लूप यूज में लिया है? अनकंडीशनल. अनकंडीशनल लूप. इट मींस ये डेटा मूवमेंट का, स्ट्रिंग मूवमेंट का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बाइट स्ट्रिंग मोमेंट का वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि until CX की वैल्यू क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए, तब तक मूव होता रहेगा. अब क्या होगा बेसिकली कि मैंने आपको फिर बताया कि DS और ES की वैल्यू मैंने आपको डिफाइन नहीं की है, ये आप कर लोगे डिफाइन. सो यहाँ जो डेटा है बेसिकली सपोज 00, वो बेसिकली यहाँ पे मूव होगा, ये आपका मूव हो गया. देन नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ही कंटेंट आपका 00 से 00 यहाँ इस 1200 लोकेशन से 2300 पे जैसे ही आपका डेटा मूव हुआ, सो अगेन SI की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ऑटो इंक्रीमेंटेड मोड मींस 1201, ये अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी. सिमिलरली जो डेस्टिनेशन की जो वैल्यू है 2301, वो भी क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी. और जैसे ही आपका डेटा 00 यहाँ पे मूव हुआ,
सो SI और DI की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी बिकॉज डायरेक्शन फ्लैग 0 है। इट मींस लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस मूव हो रहा है बेसिकली ये देख लो 2300 से 2301 लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस डेटा आपका मूव हो रहा है। और SI DI ऑटो इंक्रीमेंटेड मोड मींस SI की वैल्यू 1201 होगी और DI की वैल्यू 2301 होगी। वन मोर थिंग कि जैसे ही आपने फर्स्ट डेटा मूव किया सो CX की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या होगी 4 से आपका 3। ओके, अब जैसे यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे डेटा है 01 सो 01 यहाँ पे मूव हुआ सो अगेन आप देखोगे कि यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 02। अगेन यहाँ पे क्या होगा कि SI का जो कंटेंट है +1 से और इंक्रीमेंट होगा 02 और अगेन यहाँ पे 2302 इससे मूव होगा। अब सपोज यहाँ पे आपका डेटा पड़ा है 0E वो डेटा मूव हो जाएगा कहाँ पे आपका 2302 डेस्टिनेशन पे। अगेन यहाँ ये जो वैल्यू है वो आपकी 01। ओके, सो अगेन ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1203 से और सपोज आपका पास डेटा है F1 और अगेन डेस्टिनेशन का कंटेंट 2303 और यहाँ से F1 का डेटा यहाँ पे आपका मूव हुआ बेसिकली। अब जैसे ही आपका 4 टाइम आपने ये मूव कर दिया है क्योंकि आपने काउंट क्या स्टोर कर रखा था 04 और अब की बार यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा बेसिकली 00। अब नेक्स्ट अनकंडीशनल लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा बेसिकली अंटिल कि जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं है। अब CX की वैल्यू जैसे 0 हुई तो इट मींस जो डेटा आपको मूव करना था डेटा बाइट स्ट्रिंग आपको जो मूव करनी थी वो आपने मूव कर चुके हो बेसिकली। ठीक है, सो इस तरह से ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। Now suppose if you want to repeat the operation, repeat the string. So एक तो आप लूप आप यूज कर सकते हो। सपोज अगर आप लूप यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास में ऑप्शन है बेसिकली। सो बेसिकली आप कुछ प्रीफिक्स यूज कर सकते हो बेसिकली। फर्स्ट इज व्हाट REP। ये प्रीफिक्स अगर आप यूज करो और इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल है बेसिकली मूव्स और STOS स्टोर और मे बी सपोज अगर आप बाइट करना चाहो तो बाइट और बाइट करना चाहो तो बाइट और सपोज नेक्स्ट वर्ड यूज करना चाहो तो वर्ड, दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हो बेसिकली। ओके, सो क्या ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होगा बेसिकली। सो रिपीट व्हाइल एंड ऑफ स्ट्रिंग कब तक जब तक कि CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाए। और जैसे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और CX की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीमेंट होती जाएगी बेसिकली। सो ये बेसिकली रिपीट REP जो प्रीफिक्स बेसिकली यूज कर सकते हैं मूव्स और स्टोर्स स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। ओके, सो सिमिलरली सपोज नेक्स्ट प्रीफिक्स इज व्हाट we have REP repeat equal और REP repeat zero flag। ओके, सिमिलरली एक और आपके पास में प्रीफिक्स है REP नॉट इक्वल और REP जीरो फ्लैग नॉट जीरो फ्लैग सेट नहीं है। और ये जो प्रीफिक्स है बेसिकली कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकती हैं, ये यूज होती है CMPS कंपेयर और SCS। अब यहाँ पे बाइट तो B हो जाएगा यहाँ पे और अगर सपोज वर्ड है तो यहाँ W हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो बेसिकली मैंने लिख दिया कंपेयर के लिए और स्कैन के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं। सो मीनिंग क्या है बेसिकली ये ऑपरेशन कब तक होगा रिपीट if CX is equal to 0, CX is not equal to 0 and zero flag is what 1। ओके, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि ऑपरेशन
will be terminated. Operation will get terminated if Cx is equal to 0, या तो Cx 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए, जीरो फ्लैग क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो जैसे ही जीरो फ्लैग 0 होगा और Cx या फिर Cx 0 हो जाएगा, तब ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा बेसिकली. ओके, सो रिपीट until Cx is not equal to 0 and 0 flag is equal to 1. सो सिमिलरली REPNE के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये आप पढ़ भी चुके हो लूप ऑपरेशन में, सिमिलरली वैसा ही है जो आपने लूप में पढ़ा है. So repeat if Cx is not equal to 0 and 0 flag is what, 0. And similarly we can say operation will get terminated. Operation terminated if Cx is 0 or 0 flag is equal to what, 1. Okay. So next we have flag control instructions. So to set the carry flag, STC means carry flag क्या हो जाएगा, बेसिकली सेट हो जाएगा. नेक्स्ट CLC means क्लियर कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा. CMC कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. CLD डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर करने के लिए. STD सेट द डायरेक्शन फ्लैग. CLI क्लियर द इंटरप्ट फ्लैग. एंड टू सेट द इंटरप्ट फ्लैग we can use STI. Okay, so this is all about the control related instructions, control flag. So next we have interrupt related instructions. So these are also called the software interrupt. So the format of this interrupt instruction is like this. So int nn, and this nn is, range of this nn is from what, 00 से लेके 255. It means there are 256 interrupt related instructions. This is in decimal, so it can be defined int 00h to int ffh. Okay, so basically कैसे execute होता है interrupt related instructions. Suppose microprocessor is executing the main program. So this is what main program. And somewhere at this position there is what, interrupt. Suppose like this is interrupt int 02h. Okay, so suppose यहाँ पे कहीं interrupt occur होता है. So जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर कुछ मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और इंटरप्ट जैसे ही आया, तो क्या होगा बेसिकली कि प्रेजेंट टाइम में जो भी फ्लैग के कंटेंट है या रजिस्टर के जो कंटेंट है, वो बेसिकली क्या होगा कि स्टैक में स्टोर हो जाएंगे बेसिकली. ओके, फ्लैग के कंटेंट, रजिस्टर के कंटेंट, ये बेसिकली स्टैक में पुश हो जाएंगे या स्टैक में स्टोर हो जाएंगे. और माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम कंट्रोल बेसिकली क्या होगा कि एक न्यू मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली. और ओके, दिस इज व्हाट न्यू मेमोरी लोकेशन. New memory location. So program control will be transferred to the new memory location, and some set of program will going to be executed, and that set of program is called what, interrupt service subroutine. So this is what called, this is interrupt service subroutine, ISR, interrupt service subroutine. Okay, so interrupt
service subroutine will going to be executed, and after end of this program there will be a instruction that will be what, like RET, there will be IRET, interrupt return. Then after execution of this IRET, so program control will move to the uh, this will return to the main program. सो इस टाइप के ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा बेसिकली. सो माइक्रो प्रोसेसर सपोज कोई मैन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है. सो जैसे इंटरप्ट आपका आया, लाइक इंटरप्ट 02H, सो एट दिस टाइम जो भी फ्लैग के कंटेंट है या रजिस्टर के जो भी कंटेंट है वो बेसिकली स्टैक में आपके स्टोर हो जाएंगे, और माइक्रो प्रोसेसर एक न्यू मेमोरी लोकेशन पे मूव करेगा, और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब एग्जीक्यूट होंगे. उस प्रोग्राम को आप बोलेंगे इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन. सो इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के एंड में आपको IRET मिलेगा. सो जैसे ही IRET एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल मैन प्रोग्राम पे आपका वापस फिर से रिटर्न कर जाएगा. ओके, सो इस टाइप की बेसिक प्रोसेस परफॉर्म होगा बेसिकली. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था तो कॉल के आगे कुछ एड्रेस गिवन था. सो आपने न्यू मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट कर लिया था, बट यहाँ पे आप मेमोरी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? सो माय क्वेश्चन इज व्हाट, how to get this new memory location address of this new memory location. So अब next slide में मैं डिस्कस करूंगा आपसे. So interrupt related instruction, format of this interrupt related instruction is like this: INT and 00H to INT FFH. So total instructions are what, 256. Okay, so basically each interrupt instruction is required 4 memory location. So 4 memory locations is required to store the each interrupt address. So total we have 256 interrupts. So the memory required to store the interrupt address is what, 256 into 4. So this will be what, 1024 byte, or we can say 1 kilobyte. So 1 kilobyte memory is used to store the interrupt address. So suppose this is what, memory address. Okay, and suppose offset is what, 0000H, and suppose this is 1 2 3 and 4. ये 4 मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4. so suppose यहाँ पे stored है आपका INT 0, and similarly suppose 1 2 3 and 4. so another 4 memory location for next interrupt ING 00, and this is what, INT 01. okay, 00H 01H, and similarly suppose यहाँ पे भी आपको 1 2 3 and suppose ये 4. so ये basically required होगा आपको next INT FFH memory location. okay, and ये आपका offset हो जाएगा and 0 3FFH. okay, and टोटल जो मेमोरी आपको रिक्वायर्ड हुई कितनी, 1 किलोबाइट. इट मींस 1024 memory locations, and each memory location is having 8 bit to store the data. okay, so whenever this INT 00H is going to be executed, so that time the flag and the register will be stored into what, stack, and the program control will be transferred to the what, new memory location. We have already studied about this. so now my question is what will be the new memory location? so basically this specified address, this INT 00, INT 01, INT FL basically. so
this location is basically used to get the starting address of the new memory location. Okay, so I will discuss it on the next slide. So this 0001 FF basically ये basically use होंगे आपके new memory location find out करने के लिए. So just suppose INT 00 INT 00H के लिए अगर मैं बात करूं, so new memory location कैसे find out करेंगे हम? So suppose we are having INT NN. So new memory location. So new memory location कैसे find out करेंगे आप? So 4 into NN. NN जो भी given है उसका 4 times NN किया and content of this memory location. So that will be stored into what? IP. And similarly, suppose 4 into NN. Okay, so IP is what? 16-bit register. So it means 4 into NN or 4 into NN plus 1. इसमें आपका IP लोड होगा बेसिकली. Okay, and so 4 into NN 4 into NN plus 2. So इस लोकेशन पे जो भी आपका डेटा स्टोर है that will be loaded into what? Code segment. So the new memory location that will be what? CS into 10H plus what? IP. So this will be what? The new memory location. So suppose we have INT 02H. Okay. So so the new memory location. So new memory locations कैसे फाइंड आउट करोगे आप? So first 4 into 02H it means 08H. So यहाँ पे कोई एक मेमोरी आपने कंसीडर की बेसिकली. So offset is what? 0008H. Okay, 0009H and similarly 000AH and next 000BH कुछ इस तरह से. Okay, so the content at this location 0008H. So इस लोकेशन पे जो कंटेंट है वो बेसिकली लोड हो जाएगा किसमें? IP. और यहाँ पे सपोज आपका लोड है 30 और यहाँ पे 40 और सिमिलरली सपोज आप कंसीडर करो यहाँ पे 10. सपोज यहाँ पे आप कंसीडर करो 00 and this is what 40 and 10. So the content of IP. So content of IP will be what? 0030H, right? And so 000AH. So इस लोकेशन पे जो कंटेंट है वो बेसिकली लोड हो जाएगा इसमें कोड सेगमेंटेशन रजिस्टर. And now content of CS will be what? Content of CS will be what? 1040H. Okay, and what about the new memory location? So new memory location will be what? So this is what? Interrupt service subroutine, and this is what? Starting address of the new memory location. And starting address of this new memory location is being calculated by this CS into 10H plus IP. So after putting the value of CS and IP, we will get the new memory location. This is what? 10430H. Okay, so after executing these instructions, there will be what? IRET. Okay, so after execution of this IRET, program will return into the what? Main. Okay, so control will be written into the main program.
So this is the way through which the interrupt instruction are being executed. So in this lecture we have covered the different control related instructions, interrupt instructions, and different flag related instructions, control flag related instruction, and string related instructions.